Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss what is infrastructure and importance of infrastructure. So let's start from infrastructure. जब भी infrastructure का नाम आए आपके माइंड में एकदम क्लिक होना चाहिए कि infrastructure means energy, transport, communication, hospitals, schools, colleges. ये क्या है? ये एक इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, it is the capital stock of the economy. It is the capital stock of the economy, means energy, transport, communication, hospitals, schools, colleges. ये क्या है? Capital stock of the economy. जो क्या करता है? Which provide different types of services. Which provides different types of services. कैसे? Suppose if we are taking education from school and colleges, then we are taking services from teachers, professors. So we are taking services from teachers. In hospitals we are taking services from doctors. And when we talking about energy and transport, without electricity the production of goods and services is not possible, and without transport we can't export our goods from one place to another place. So hospitals, school and colleges, it will come in social infrastructure, and it helps to improve the quality of human resources, and also focus on human development. And if we talking about energy, transport and communication, it will come in economic infrastructure. It helps to improve the economic resources. It helps to improve the energy, transport and communication. Now after infrastructure we are going to discuss the importance of infrastructure. We are going to discuss the importance of infrastructure. Raise the productivity. कैसे? Our production depends upon primary, secondary and service sector. So primary, secondary and service sector. Our production depends upon primary, secondary and service sector. Primary sector is related to agriculture, secondary is related to industry,
and service sector is related to transport. Agriculture is totally depend upon irrigation facilities. So irrigation facility is a infrastructure, and secondary sector related to industry, and industry is totally depend upon electricity, because without electricity production is not possible. Without electricity we can't do production of goods and services. And if we're talking about service sector, it's related to transport. Transport is very helpful for transport of गुड्स एंड जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर हैं, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो क्या होगा, इट रेज द प्रोडक्टिविटी, ये हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा. सेकंड पॉइंट, रेज द साइज ऑफ मार्केट. Large scale production can capture more market. जितनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा हम क्या करेंगे, मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, उतने ज़्यादा हम मार्केट को कैप्चर करेंगे. थर्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी, एंड सेकंड, क्वालिटी ऑफ लाइफ. We are talking about productivity, so productivity is related to economic infrastructure, and quality of life, it's related to social infrastructure. So these two factors play very important role for development of a country. Fourth point, agriculture development. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे होगी, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, बिकॉज एग्रीकल्चर इज डिपेंड अपॉन, एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है, वी ऑलरेडी डिस्कस इरिगेशन फैसिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट. अगर हमारी इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होगी तो हमारी प्रोडक्शन अच्छी होगी, किसमें, एग्रीकल्चर में, और हम क्या करेंगे, इजीली ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. So it's a agricultural development. Fifth point, functioning of economy. There are three sectors: primary, secondary and service sector. All of these three sector depends upon infrastructure. डिपेंड्स अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर हमारी इरिगेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अच्छी होगी तो हमारी एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन अच्छी होगी. 6 पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट
generate. It is very helpful for employment generation. कैसे? क्या होगा जब किसी एक इकोनॉमी में कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कैसे? जब एक इकोनॉमी में डैम्स, रोड, फ्लाईओवर, मतलब इट मींस कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लोगों को उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। 7th पॉइंट, it induces FDI. It means private public partnership. जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था दूसरी कंट्री से, वो इंडिया में इंक्रीज होने लगा। तो it induces FDI. Next point, it facilitates outsourcing. It means अगर किसी कंट्री के पास, if a country having good infrastructure, then foreign country attracts for outsourcing of their project. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get all the latest videos. Thanks for watching.